The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of the parliament. The monsoon session will be held from the 21st of this month to the 21st of the next month. Now remember, the India Bloc parties held an online meeting yesterday to reach a consensus on issues that they would raise in order to corner the government. Let's in fact have a look at some of the reactions. तो कल हमारी ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की जो मीटिंग है उसमें जो आएंगे और उसके बाद जो स्पीकर साहब लोकसभा में और चेयरमैन साहब राज्यसभा में अलाउ करेंगे, उन सब मुद्दों पे सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार कुछ भी छिपाना नहीं चाहती है, कोई भी मुद्दा हो। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के 24 बयान, SIR बिहार कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किस तरह लोकतंत्र को गिरवी रख रहा है, फॉरेन पॉलिसी चाइना के मुताबिक गाजा और पाकिस्तान के लिए, डिलिमिटेशन, फिर एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन और माइनॉरिटी। कुल मिलाकर ये बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, चिंतित होते हुए और एकजुट होकर लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट में हम मुद्दे उठाएं, सरकार जवाब दे, जो लोकतंत्र की शान हो। नहीं, महंगाई, बेरोजगारी महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ये सारे इश्यूज हम उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हमने गवाए और पूना की 2 फैमिलीज है। वो जगदाड़े फैमिली की बेटी मुझे फोन करके पूछती है कि ताई, जिसने मेरे फादर की हत्या की, पिताजी की हत्या की, उन लोगों का क्या हुआ, उसको मुझे जवाब देना। वो लड़की न्याय मांग रही है कि मेरे पिता की हत्या किसने की, जवाब दो। तो सुप्रिया सुले को जाके पूछना पड़ेगा केंद्र सरकार को, जगदाड़े की बेटी को मुझे जवाब देना है। The monsoon session is just beginning. What are the issues that the government will be keeping forth? सरकार अपना काम अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पर करती है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का मानसून सत्र भी ठीक रहने वाला है। जो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट है वो एज पर द शेड्यूल रहने वाला है। सभी पार्टी के लीडर्स से, हमारे सीनियर लीडर्स की बात चल रही है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। My colleague Ishwarya Jain joins us on the broadcast. Ishwarya, I must ask you that, of course, the government has called for an all-party meet, which will take place in a few hours from now. Help us understand what are some of the talking points that are going to be in this all-party meet. Well, what we already know is that government has stated that they are ready for any sort of discussion, but the political parties should come out with their own issues in this all-party meeting, and if the consensus will be made amongst all the political parties, then certainly they are ready for discussion on the floor of the House as well. Till now, the sources have confirmed to us that there will be 7 bills that the government is planning to bring for introduction and passing, and it will be all the political party floor leaders who had been invited today. The meeting that will be chaired most likely by Defence Minister Rajnath Singh. It is, of course, the opposition parties who had stated that there are issues like Operation Sindoor, the aftermath of it, and why there was intelligence failure, why there were no terrorists till now that had been caught, and why it was United States President who first announced the mediation between India and Pakistan. So regarding all of that, of course, the opposition parties will be demanding an answer, and most likely it would be the Defence Minister Rajnath Singh who is going to make a statement on both the floor of the houses as far as Lok Sabha and Rajya Sabha is concerned. Apart from it, the issue of Bihar voters and the foreign policy of India regarding Gaza and China as well. These are important issues that can be brought up, but a very important session. The government has stated that they are willing to have any discussion without any disruption, and the
disengagements between the opposition and the treasury benches, the House should function very smoothly. A productive session is something that the government is looking forward to.